Anurag Mehta. So basically, casting is a process where so I will just take you to the little journey. What happens? What is the casting? So casting is basically when you see when you read a story, or when you see any form of play or film or any screenplay or anything. So there are a lot of characters in which we know कि ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है. The particular person has the particular qualities, particular ये बंदा ऐसे लगना चाहिए, ये बंदा ऐसे होना चाहिए, इसकी ये qualities होनी चाहिए. And to find those people, that's what casting, basically a casting director's job is. And to get them to their vision, like a writer has written something in a particular mind, kind of an imaginary character. He thinks that my guy should look like 7 feet height, with very weird face, long hair, and he should be like speaking Arabic, or he should have this big hands or something. And apart from that, his inner character should be like this, psychology should be like this, so something, whatever he has written. So as a casting director, we find such people, we find human beings who can exactly either not look like that, we can make them like them, but जितना हम उनको कैरेक्टर से नज़दीक लेके जा सकते हैं, लाइक टूवर्ड्स व्हाट माय डायरेक्टर एंड राइटर्स इज इमेजिनिंग, हाँ यार ये ऐसा लग सकता है, ये ऐसा हो सकता है. सो दैट्स व्हाट द होल प्रोसेस इज. सो व्हाट हैपेंस इन अ फिल्म, फॉर एग्जांपल व्हेन चक्रव्यूह वाज माय फर्स्ट फिल्म, देन वी डिड रामलीला. सो जब मुझे रामलीला मिली थी तो वी गॉट अ स्क्रिप्ट. एज सून एज वी गॉट अ स्क्रिप्ट, वी बिन थ्रू द स्क्रिप्ट and we made a note of characters, कि whatever जो भी था, राम, लीला, राम की मॉम, लीला's father and whatever जो भी थे. And after that we get down with our own list of actors. We felt कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ये लोग हैं, they can be part of it, ये fit हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है. We had lot of discussions. Then we went with Sanjay sir. We showed him कि we think like this way. Then he felt कि no, I don't think so. My Leela's mom, he should look like this. In his head, he was looking more of a little more of a dehati face, not a very, you understand, like little more savli si maa. वैसे he was thinking like that way. But we came up with the whole thing कि why not? Can we transform this character into something like this जो ऐसा लग सकता है? And that time Supriya ma'am was doing खिचड़ी, जो it was very comical get-up and comical attire. So sir was like, अरे yeah, but you know, she's very comical face and कैसे, I don't know, I'm unable to visualize her. So we said कि why not? You think so that she can play? She said yeah, definitely, she's very good and I think we should really think about it. Then we went and we spoke to Supriya ma'am and we said, can we just do a test or something? So she gave a test and she got that part. And we transformed that whole thing into the character. So somewhere sir also says something कि मुझे characters नहीं, I think like this way and I think like that. And then we go little ahead and then we finally come back to the whole thing. अच्छा, these are the people whom we need to cast. ये लोग हैं जिनको हम बुलाना चाहते हैं, ये लोग हैं जिनको हमको नहीं बुलाना है, and ये लोग हैं जो जिनको may be possibility है और नहीं भी है. And then we start the process of auditions. It comes much later. So initial level पे ही, like many times you will find now, अब जब जाओगे auditions देने कहीं पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि auditions कब हो रहे, कहाँ हो रहे, कैसे हो रहे. The reason is that because already ये first process में ये बहुत हो चुका होता है. So auditions is like, it's almost like the last stage where we call people. It's like just a physical thing, like जैसे हम, like you know, you want to make something, so that's what the last process is. That उसके पहले ऑलरेडी राउंड्स हो चुके होते हैं, कि डिस्कशंस हो चुके होते हैं, एंड देन वी कॉल देम एंड देन वी गिव देम अ स्क्रिप्ट एंड व्हाटएवर. इन आवर प्रोसेस, लाइक आई गिव देम स्क्रिप्ट वेल इन एडवांस, बट जब आप बाहर जाओगे तो उतना होगा नहीं. दे विल गिव यू लाइक मे बी 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले और समथिंग लाइक दैट, एंड दे गिव अ स्क्रिप्ट, यू प्रिपेयर द स्क्रिप्ट एंड यू गिव अ टेस्ट, एंड दैट्स व्हाट इट इज. In short, this how the major of the casting director works in this way, this format. So now when you give introduction about yourself, when you introduce yourself, you please remember this,
एक सेकेंड बात मैं लेता हूँ. वेन एवर यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर समथिंग, गिव द इन्फॉर्मेशन करेक्ट. डोंट वेट फॉर द थिंग कि अच्छा, जैसे इन बिटवीन आई ऑल्सो आस्क यू कि हाँ अच्छा ठीक है, देन यू सेड आई वुड लाइक टू गिव यू माई हॉबीज. एग्जैक्टली यू शुड नो कि क्या बातें करनी है. द कोलकाता गर्ल, like you need to know, you need to give your information very correctly in short time. Hardly तुम्हारे पास 10 सेकेंड होगा या 20 सेकेंड होगा जो इंट्रोडक्शन ले रहा है. यू माइट बी थिंकिंग क्या हो रहा है. इंट्रोडक्शन इज लाइक सुना होगा whatever, is like you know you speak about yourself and you give profiles to the camera and done. But you know what, today's time, like that's what we started in YRF when I was an assistant. Me and Shanu, we started there the process called introduction, because nowadays introductions are the most important. Later on it comes on to your acting skills and बुलाते हैं, टेस्ट देते हैं, तो बहुत बाद में आएगा. ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली डायरेक्टर चूजेस कि अच्छा ये अच्छा है कि नहीं है, बुरा है कि नहीं. एंड इंट्रोडक्शंस क्या होता है, इट्स बेसिकली योर ओन पर्सोना, व्हाट यू स्पीक. तुम्हारे बारे में अंदर तक हमको पता चल जाता है कि क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने कॉन्फिडेंट नहीं हो. सो वेन एवर यू वांट टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, बी वेरी क्लियर, बी वेरी प्रिसाइज. कुछ फंबल मत करो. जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बोलो. नो नीड, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो इंग्लिश में बात मत करो. हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बोलो. राइट नाउ इन मुंबई दे आर द टू लैंग्वेजेस विच पीपल वर्क. अनलेस एंड अनटिल इफ एनी रीजनल फिल्म हैपन्स तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो अगर रीजनल लैंग्वेज की बात है. बट अगर मोस्ट ऑफ द वी डू हिंदी एंड इंग्लिश फिल्म, सो वहाँ पे वट एवर यू स्पीक इट नीड्स टू बी डिलीवर्ड वेरी करेक्टली. और इसका ये जो फर्स्ट स्टेप है, इट कम्स इन योर इंट्रोडक्शन. व्हेन यू स्पीक टू इंट्रोडक्शन, स्पीक, लुक इनटू समबडीज आईज एंड स्पीक. जब कैमरा रहेगा तो लुक इनटू द कैमरा एंड स्पीक, बिकॉज द डायरेक्टर इज वॉचिंग यू ओवर देयर. वो देखेगा तुम्हारी आंखों में कितना तुम सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, कैमराज आर द, कभी झूठ नहीं बोलता. लाइक बताया होगा, कब पकड़े जाओगे. झूठ करो, जितना भी कहीं पे भी वो करोगे कि चीट होगा, कुछ होगा, पता नहीं इन्फॉर्मेशन, पकड़े जाओगे. इम्पॉसिबल है कि वो नहीं पकड़े जाओगे. अनलेस एंड यू आर like outstanding liars, so then it works. But then you are one of the best actors. Like you have seen kids ना, जब वो बोलते हैं ना हमको, they speak in their own world, their own charm, but they speak so correctly that you are with them. Exactly, introductions are those things. You have to make that other person with you in whatever that 10 seconds. In introduction everything counts. The way you are standing, what you are wearing, how your hairs are, तुम्हारा क्या कलर है, सब कुछ काउंट होता है. So it doesn't matter like somebody wants to say hi I'm Parag and like I'm this I'm that, but उसकी बॉडी का लैंग्वेज ये है कि his innate persona ये है क्या, then if that person says this then it works. But if you are not like this and you're trying to be like this, then it doesn't work. So what you are, that you need to observe with your teachers and stuff कि what your personas are. जैसे if you observe yourself कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, you know, so the best thing what I feel I just do when I do workshop with the casting, so what I do, I tell them to write a page about themselves and figure it out. Just write immediately about yourself and you know exactly what you are, where you like, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पता चल जाता है. And just imagine, उसी को अंदर और आगे लेके जाना, उसी को बताना है, उसी को भेजना है आगे. So it doesn't matter, it's just that it should not look like, for example, you're not from New York and you're talking like New York guy, it just doesn't work. Will make you New York guy later on. And the same way, if you're not from any Kasbah or from Bihar or something and you are acting like that, it will never work. It needs to be that thing what it comes from within. So like I'm sure I just gave you the answer. In introductions, always whatever you're going to wear guys, especially your clothes are very important. For girls, we still prefer, it's like a white ganji and a blue jeans, it works always for an introduction. And unless and until the casting director tells you कि don't wear white because of the background stuff, then you wear some another color, a black or something else color. But it always works. And see yours, अब ये भी देख लो कि colors कौन से आप पे अच्छे लगते हैं. Everybody has a different persona. किसी में कुछ colors अच्छे लगते हैं, किसी में कुछ colors अच्छे नहीं लगते. तो ये करना बहुत ज़रूरी है because you all are actors and you want to present yourself. Are you with me guys? So this is the first step towards the whole
थिंग कॉल्ड इंट्रोडक्शन, इट्स वेरी मच नेसेसरी. उसके बाद देन विल सी, विल कॉल यू फॉर अ टेस्ट. इफ यू फाइंड योर पर्सोना इंटरेस्टिंग, ये है, देन विल कम द सेकेंड पार्ट कि चलो अच्छा चलो ठीक है, इनको बुलाते टेस्ट के लिए. अब टेस्ट के लिए बुलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे भी हो, कहाँ से भी हो, इट डजेंट मैटर, बट you need to have a very interesting something about yourself which is very unique. Find that uniqueness in you. In this अभी तो अभी आपका वर्कशॉप चल ही रहा है, कर ही रहे हो, फिगर इट आउट. लाइक सी मार्क, आपको पता चलेगा क्या क्या यूनिकनेस है आपके अंदर. थिंक अबाउट इट. अगर नहीं है आइडिया तो सोचो इस बारे में. यू विल कम टू नो इवेंचुअली. बट इट्स वेरी मच नेसेसरी बिकॉज एज सुन एज यू कम for auditions and something, this is the most unique thing what is about you. It's called yourself, and that needs to come out. Rejection, failures. Have you seen Anupam sir's IFA ka speech abhi, his journey? You know, I take inspiration from there. I get rejected every day. आज ही मैं अभी मैं like 2.5 hours before I was with my director. I don't want to name her. I'm casting for this very big production house, and I was with director. And director was absolutely furious because 7 July is the shoot date. एक actor नहीं मिल रहा, cast नहीं मिल रहा. हम लोग झगड़ रहे हैं, like to the next level fight हो रही है. You're not giving me options. This is not happening. That is not happening. And I was like, अरे, just calm down. I will get you an actor. Don't worry. No. To the next level. I felt rejected. So I went, okay, मैं 10 मिनट रुका. Immediately I came back with lot of other options. ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ. तो she said, yeah, मुझे चलेगा, हाँ ये भी चलेगा. मतलब ये exactly पहले हमने दिखा चुके थे, आपने ना बोला था इसको. So that's how you have to work with your rejection. Keep looking for the light. Don't go into the darkness. Find something unique in you which we don't know about you and which stands out